Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Darsul Quran regarding to the Ramzanul Mubarak Day 2. रमज़ानुल मुबारक के दूसरे दिन के लिए आज का दरसुल कुरान। आज का दर्स सूरतुल बकरा से शुरू होगा। Today's dars is going to start from सूरतुल बकरा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Surah Al-Baqarah is the chapter 2 of the Holy Quran. This is the longest surah of the Quran. It was revealed at Medina in the first 4 years after the Hijrah and is known as Al-Baqarah. The name was used by the Holy Prophet himself. The surah seems to have derived its title from verses 68 to 72, where an important incident in the life of the Jewish nation is briefly mentioned. For a long time, the Jews have lived in Egypt as serfs and slaves under the most cruel bondage of the pharaohs, who were cow worshippers. As is generally the case with subject races, they had borrowed from, slavishly imitated many customs and habits of the Egyptians and consequently had come to possess a strong liking, bordering on adoration for the cow. When Moses told them to sacrifice a particular cow, which symbolized their object of worship, they made a great fuss about it. It is this incident to which verses 68 to 72 refer. The surah has 40 sections and 287 verses. It opens with a statement of three fundamental beliefs: belief in God, revelation, and life after death, and two particular ordinances about prayer and zakat, the rest being an extension and explanation of these principles and ordinances. In response to the prayer for guidance, the Quran claims to present a perfect code of law which comprises all the truths that were found in earlier revealed scriptures, with much more that they did not contain, and claims also to guide man to the highest pinnacle of spiritual glory. Bismillahir Rahmanir Rahim. It is the first
verse of this chapter. In the name of Allah, the gracious, the merciful. Alif Lam Mim. These are the abbreviations. Detail about the abbreviations. Abbreviations like Alif Lam Mim are known as al-muqatta'at, letters used and pronounced separately, and occur in the beginning of not less than 28 surahs and are made up of one or more to a maximum of 5 letters of the Arabic alphabet. The letters out of which these abbreviations are constituted are 14 in number. Alif, Lam, Mim, Sad, Ra, Kaf, Ha, Ya, Ain, Ta, Sin, Ha, Kaf, and Nun. Of these, Kaf and Nun occur alone in the beginning of surahs Kaf and Qalam. The rest occur in combinations of 2 or more in the beginning of certain surahs. The use of muqatta'at was the vogue among the Arabs. They used them in their poems and conversation. An Arab poet says, Qulna kifi lana faqalat kafi. We said to her, stop for us for a while, and she said that she was stopping. The letter Kaf, standing for Waqaftu, I am stopping. There is also a saying of the Holy Prophet as reported by the Qurtubi to the effect Kafa bisayfi Shah. Sufficient is word as a remedy Shah, standing for Shafiyan. In the modern West, imitation in Eastern countries also abbreviations are very popular and widespread. Every dictionary provides a list of them. The muqatta'at are abbreviations for specific attributes of God and the subject matter of a surah before which they are placed has a deep connection with the divine attributes for which they stand. They have not been haphazardly placed at the beginning of the different surahs, nor are their letters combined arbitrarily. There runs a deep and far-reaching connection between their various sets, and the letters of which they are made also serve a definite purpose. The subject matter of those chapters which have no abbreviated letters is subordinate to and follows the pattern of the subject matter of the preceding chapters, processing them of a meaning ascribed to muqatta'at muqatta'at to seems to be more authentic. First, that each letter has definite numerical value. The letter Alif, Lam, Mim have the numerical value 71. Alif having numerical value 1, Lam 30 and Mim 40. Thus the placing of Alif, Lam, Mim in the beginning of the surah may signify that its subject matter, that is the special consolidation of early Islam, would take 71 years
to unfold itself completely. Second, they are stated above abbreviation for specific attributes of God. And surah before which muqatta'at are placed is, in its subject matter, connected with the divine attribute for which the specific muqatta'at stand. Thus, abbreviation Alif Lam Mim placed here and in the beginning of the third, 29th, 30th, 31st, and 32nd chapter of the Quran signifies I am Allah the All Knowing, which has the authority of Ibn Abbas and Ibn Masud. Alif standing for Ana, Lam for Allah, and Mim for Alamu are, according to some, Alif stands for Allah, Lam for Jibril, and Mim for Muhammad, indicating that the central theme of the surah is divine knowledge, which was given to Muhammad by Allah through Jibril. These abbreviated letters form an integral part of the Quranic revelation that is mentioned in Bukhari. Zalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin. This is a perfect book. There is no doubt in it. It is a guidance for the righteous. Dhalika. Dhalika is primarily used in the sense of that, but is also sometimes used in the sense of this. Sometimes it is used to indicate the high rank of dignity of the subject to which it refers. Here it signifies that the book is, as it were, remote from the reader in the eminence and loftiness of merit. The particle al, zalikal kitab. The particle al, particle al, the particle al, like the definite article the in the English language, is used to denote a definite object known to the reader. In this sense, the word Dhalikal Kitab would mean this is the book or this is that book, the promised book. The particle is also used to denote the combination of all possible attributes in one individual. The expression thus means this is a book which possesses all those excellent qualities which a perfect book should possess, or it means this alone is a perfect book. Zalikal kitab la rayba fi. Rayb means disquietude or uneasiness of mind, doubt, affliction, or calamity, and evil opinion, false charge, or calumny. The verse does not mean that nobody will ever entertain any doubt about the Quran. It only means that its teaching is so rational that a right thinking person who approaches it with the unbased mind will find it a safe and sure guide. Hudallil muttaqin. Allazina, it is the guidance for the righteous. Allazina yu'minuna bil ghaib, who believe in the unseen. Wa yuqimuna salata,
and they observe prayers. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, and spend out of what we have provided for them. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Al-Ghaib means anything hidden or invisible, anything unseen, absent, or far away. God, the angels, and the last day are all Al-Ghaib. Moreover, the word as used in the Quran does not mean imaginary and unreal things, but real and verified things. Though unseen, it is therefore wrong to suppose, as some Western critics of the Quran do. Some Western critics of the Quran do, that Islam forces upon its followers some mysteries of faith and invites them to believe in them blindly. The word signifies things which, though beyond the comprehension of human senses, can nevertheless be proved by reason or experience. The supersensible need not necessarily be irrational. Nothing of the unseen in which the Muslim is called upon to believe is outside the scope of reason. There are many things in the world which, though unseen, are yet proved to exist by invincible arguments, and nobody can deny their existence. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, and they spent out of what we have provided for them. What does rizq mean? وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, and they observe prayers. The clause they observe prayer means they perform their prayers with all the prescribed conditions. Aqama meaning he kept the thing or affairs in a right state. Worship is the outer expression of the inner relationship of man to God. Moreover, God's favor surround the body as well as the soul. The perfect worship is that in which body and soul both play their part. Without the two, the true spirit of worship cannot be preserved. For though adoration by the heart is substance and adoration by the body only the shell, yet the substance cannot be preserved without the shell. If the shell is destroyed, the substance is bound to meet with a similar fate. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, and they spent out what we have provided for them. Rizq. Rizq means anything bestowed by God on man, whether material or otherwise. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, and who believe in that which has been revealed to thee and that which was revealed before thee, and they have firm faith in hereafter. Belief in the Holy Quran, belief in the Holy Prophet is the central point so far as belief in the prophets of God is concerned.
Islam makes it obligatory upon its followers to believe in the divine origin of the teaching of all previous prophets because God sent his وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, and who believe in that which has been revealed to thee and that which was revealed before thee, and they have firm faith in the hereafter. Belief in the Holy Prophet is central point so far as belief in the prophets of God is concerned. Secondly, Islam makes it obligatory upon its followers to believe in the divine origin of the teaching of all previous prophets because God sent his messengers to all peoples. Al-Akhirah means first the last abode, that is the next life. Secondly, it may also signify the revelation which is to follow. This second meaning of the word find further exposition in 62, chapter 62, verses 3, 4, where the Quran speaks of two advents of the Holy Prophet. His first advent took place among the Arabs in the 7th century of the Christian era when the Quran was revealed to him, and his second advent was to take place in the latter days in the person of one of his followers. This prophecy found its fulfillment in the person of Ahmad, the promised Messiah and founder of the Ahmadiyya movement. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. It is they who follow the guidance from their Lord, and it is they who shall prosper. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Those who have disbelieved, it, being like to them, whether thou warn them or warn them not, they will not believe. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. Allah has set a seal on their hearts and their ears, and over their eyes is a covering, and for them is a grievous chastisement. The verse speaks of such disbelievers as become so indifferent to truth that it does not matter whether they receive a warning or not. Of these, it is declared that as long as their present condition continues, they will not believe. Organs which remain unused for a long time atrophy and become useless. The disbelievers mentioned here refuse to employ their hearts and ears for the comprehension of truth. Consequently, their capacities for hearing and understanding were lost. It is only the natural consequence of willful indifference which is described in the clause. Allah has set a seal. As all law as all laws proceed from God and every cause is followed by its natural effect under His will. So the sealing of the hearts and the ears of disbelievers is ascribed to Him.
That is enough for today. Now I'll go to the Urdu part. आज के दर्स में सूरतुल बकरा का पहला रुकू शामिल है। उस तिलावत पहले हो चुकी है, मैं तर्जमा और कुछ तफसील इसकी करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह का नाम लेकर जो बेहद करम करने वाला और बार बार रहम करने वाला है पढ़ता हूँ। ये बिस्मिल्लाह हर सूरत के आगाज में आती है और उस सूरत का हिस्सा है। उस सूरत की पहली आयत है, सिवाय एक सूरत के जो सूरतुल बराआ है। अलिफ लाम मीम, मैं अल्लाह सबसे ज्यादा जानने वाला हूँ। ये मुक़त्ताआत हैं और इनको अलग अलग हुरूफ की सूरत में पढ़ा जाता है। बाज़ लोग तो कहते हैं कि ये ऐसे हुरूफ हैं जो सूरतों के आगाज में आए हैं, जिनकी कुनों को सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है, हमें उसका इल्म नहीं। लेकिन अहादीस में इसकी वजाहत मिलती है और इस किस्म के और मुक़त्ताआत दूसरी सूरतों में भी आए हैं जिनके मानी भी मौजूद हैं, यानी ये बामाना और समझ में आने वाले कलिमात हैं। अलिफ लाम मीम और इसी किस्म के और हुरूफ जो मुख्तलिफ सूरतों के शुरू में आते हैं, उन्हें मुक़त्ताआत कहा जाता है। ये हुरूफ अलग अलग बोले जाते हैं। उनमें से हर हरफ एक लफ्ज़ का कायम मकाम होता है। मसलन अलिफ लाम मीम में अलिफ अना का कायम मकाम है और लाम अल्लाह का कायम मकाम है और मीम आलमु का। गोया अलिफ लाम मीम के तीनों हुरूफ मिलकर अनल्लाहु आलमु के माने देते हैं, यानी मैं अल्लाह सबसे ज्यादा जानने वाला हूँ। इन हुरूफ के जरिए अल्लाह ताला की उन सिफात की तरफ इख्तिसारन इशारा होता है जो उस सूरत में बयान हुई हैं, जिसके इब्तिदा में ये हुरूफ लाए जाते हैं। बाज़ औक़ात बयानशुदा सिफत का पहला हरफ ले लिया जाता है और बाज़ औक़ात कोई और अहम हरफ। बाज़ सूरतें ऐसी भी हैं जिनसे पहले कोई मुक़त्ता नहीं रखा गया। ऐसी सूरतें अपने से पहली सूरत के ताबे होती हैं जिनमें कोई मुक़त्ता होता है। बाज़ मुफस्सिरीन ने इन हुरूफ से इल्म अबजद के मुताबिक आदाद आदाद निकाले हैं और उनसे बाज़ वाक़यात की तरफ इशारा मुराद लिया है जो इन सूरतों में बयान हुए हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ज़ालिका इसम इशारा है जिसके माने वो के होते हैं, लेकिन किसी खास चीज की तरफ इशारा करने के लिए भी बोला जाता है और उसकी अहमियत की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए, खा वो चीज करीब ही हो, ये दूर का इशारा इस्तेमाल होता है। अल किताब, अलिफ लाम इसमें कमाल के लिए है, यानी ये कामिल किताब। और बाज़ औक़ात ये अलिफ लाम किसी ऐसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए भी आता है जिस जो ज़हनों में मौजूद होती है और कहा जाता है कि ये वो किताब है या वही किताब है। तो इन दोनों को मिला के यहाँ पे तर्जमा बनेगा, यही कामिल किताब है। ला रैब फीह है, इस अमर में कोई शक नहीं। इसमें यह मुराद नहीं है कि कोई इसमें शक नहीं करेगा, बल्कि लोग शक तो करते हैं, लेकिन हकीकतन कोई ऐसी बात इसमें मौजूद नहीं जिस पर वाक़यतन शक किया जा सके। हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मुत्तकियों के लिए हिदायत है। वो मुत्तकी कौन हैं, उनकी तफसील, उनकी सिफात अगली आयात में बयान हो रही हैं। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। गैब से क्या मुराद है? गैब से हर वो चीज जो बज़ाहिर आंखों से नजर नहीं आती, लेकिन वो हकीकतन मौजूद होती है और दलाइल के जरिए वो साबित होती है। ये नहीं है कि
कोई ये ऐसी गैर मरी और गैर साबित शुदा चीजें हैं जिन पर ईमान लाने का दावा किया जा रहा है। तो मुत्तकी लोग वो लोग होते हैं जो गैब की बातों पर भी ईमान लाते हैं। तो इस गैब में अल्लाह की ज़ात भी मौजूद है, जो जिसकी हस्ती के दलाइल मौजूद हैं। फरिश्तों का जिक्र भी इसमें आ जाता है और आखिरत का जिक्र भी इसमें शामिल है। वयुकीमून सलाता, वो मुत्तकी नमाज को कायम करते हैं। कायम करने से ये मुराद ये है कि उसमें जो उसको पूरे आदाब के साथ अदा करते हैं, जैसे उसका तरीक है उसके मुताबिक अदा करते हैं, उसको बाकायदगी से अदा करते हैं, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ते। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जो कुछ हमने दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। तो जो कुछ अल्लाह ताला ने दिया हुआ है उसमें माल भी आ जाता है, उसमें इंसानी सलाहियतें भी आ जाती हैं, उसमें दीगर अल्लाह ताला की नेमतें भी आ जाती हैं जिनको खर्च करने का जिक्र है और उनके ज़रिए दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने का जिक्र है। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और वो लोग मुत्तकी लोग उस पर भी ईमान लाते हैं जो तुझ पर नाजिल किया गया है और जो तुझसे पहले नाजिल किया गया था। ये इस्लाम की खासियत है कि वो सिर्फ कुरान मजीद पर ईमान लाने का हुक्म नहीं देता, बल्कि दूसरे अंबिया पर जो सहीफे नाजिल किए गए उन पर ईमान लाना भी लाजमी करार देता है। इसी तरह से न सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का हुक्म देता है, बल्कि तमाम पहले अंबिया पर भी और पहले और बाद के यानी दीगर अंबिया पर ईमान लाने का हुक्म भी कुरान मजीद देता है। तो किसी का भी इनकार नहीं किया जा सकता, एक नबी का इनकार सब नबियों का इनकार होता है। तो यहाँ इस चीज़ की कुछ तफसील बयान फरमा दी कि जो तुझ पर उतारा गया है उस पर भी वो मुत्तकी ईमान लाते हैं, वमा उनजिला मिन क़ब्लिका, और जो तुझसे पहले किताबें या सहीफे उतारे गए उन पर भी वो ईमान लाते। व बिल आखिरत हम यूक़िनून, और आखिरत की मऊद बातों पर भी वो यकीन रखते हैं। तो इसमें उखरवी ज़िंदगी भी मुराद है, और इसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दो अदवार थे, पहला दौर खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और दूसरा दौर उस मऊद का दौर है जिसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुरूज के तौर पे आना था और आपके दीन को दुनिया में फैलाना था। तो उसका भी जिक्र है। व बिल आखिरत हम यूक़िनून, और इस आखिरत पर भी वो पूरी तरह से यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, ये लोग जो इन सिफात के मालिक हैं ये अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। कोई उन्हें उस हिदायत से हटा नहीं सकता, कोई उन्हें काफिर नहीं कह सकता, किसी को ये हक नहीं है। अल्लाह ताला जब एक फैसला दे दे कि जो लोग ये काम करते हैं वो अपने रब की तरफ से हिदायत याफ्ता हैं। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और वो कामयाब होने वाले हैं। उनकी कामयाबी की गवाही भी अल्लाह ताला दे रहा है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, ऐसे लोग जिन्होंने कुफर किया और तेरा उनको डराना या ना डराना उनके लिए यकसां असर पैदा करता है, जब तक वो इस हालत को ना बदलें या वो ईमान नहीं लाएंगे। तो यहाँ पर उन काफिरों का जिक्र है जो सुनने के बावजूद ईमान नहीं लाते और अपने कुफर पर कायम रहते हैं। तो उनको डराना, तेरा डराना, उनको पैगाम पहुंचाना या ना पहुंचाना उनके लिए बेसूद है। वो ईमान नहीं लाते या ईमान नहीं लाएंगे। ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के दिलों पर मोहर कर दी है। व अला समीहिम, और उनके कानों पर भी। व अला अबसारिहिम गिशावा, और उनकी आंखों पर पर्दे हैं। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। इसमें यह वजाहत फरमा दी कि चूंकि उन्होंने अपने दिलों से काम नहीं लिया, कानों से काम नहीं लिया, अपनी आंखों से काम नहीं लिया, जिसके नतीजे में उनके ये आज़ा बेकार हो चुके हैं, गोया उन पे एक मोहर लग चुकी है
اور اب وہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں، حقائق کو دیکھتے نہیں ہیں، جو باتیں کہی جاتی ہیں ان کو سنتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے اب وہ کفر میں پکے ہو چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں لہم عذاب عظیم، ان کے لیے ایک بڑا عذاب مقدر ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ کل۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم انکا حمید مجید۔